ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଆଇଏମ୍ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୱାରନେସ୍ ୱିକ୍ 2025 ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସତର୍କତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୱାରନେସ୍ ୱିକ୍ 2025ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିବିସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। 2025. Even hugely, we have gathered here to observe National Vigilance Awareness Day, a day that reminds us the importance of integrity, transparency, and accountability in every aspect of our lives. This day is observed every year during the birthday week of Sardar Vallabhbhai Patel, who has a symbol of honesty and integrity in public life. The Central Vigilance Commission initiated this observation to promote ethical behavior and fight corruption in all forms. Every year, the Central Vigilance Commission announces a theme to guide our efforts and awareness activity. The theme for National Vigilance Awareness Week 25 us to be responsible citizen, uphold honesty, and contribute to building a corruption-free India. Give a huge round of applause. Let us begin the lamp. Symbolize truth, knowledge, and integrity. Thank you, dignitaries, for doing the honor. I request all the dignitaries kindly join me. Thank you, sir. Today we are privileged to having such an eminent personalities along with us, the respective guests of this today's event. And as a mark of respect and recognition, I request the student volunteers come forward with the badges and put the badges to the dignitaries. Huge round of applause. Welcome to IIT Group of Institutions for today's event, National Vigilance Awareness Week 2025. And you impart knowledge, but also ignite passion and purpose in every learner. He is none other than our Professor Ashish Kumar Swami. मो ना प्रोफेसर आशीष कुमार स्वाई मु प्रिंसिपल अच्छी आईएमबी स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। एक्चुअली आईएमबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तरफ आम नेशनल विजिलेंस अवेयरनेस वीक कंडक्ट करूँ आज, जोटा कि डायरेक्टेड बाय द सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिशन। आज आम चीफ गेस्ट अच्छा एसपी विजिलेंस भुवनेश्वर डिविजन श्री सरोज कुमार सामल एंड पे बहुत इच्छुक अच्छा बहुत किसी जिन शिखे केमती आम करप्शन फ्री सोसाइटी आम कर पिला ये गठन देकर भूमिका कौन रही से विषय आज आलोकपात करूँ एवं बेसिकली माने किंतु पिला एजुकेशन भूमिका कौन भिजिलेंस तो आम से इंस्ट्रक्ट करूँ एडवाइस दूसु कि every student has to be vigilant and they have to stay away from all the negative thoughts and से माने निजो केमती डेवलप करेंगे सोसाइटी केमती गोटे प्रॉस्परस करेंगे से विषय में आज आमर प्रोग्राम स्टार्ट होगा जाऊँगी एवं आम मैंने बहुत एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड अच्छु एंड वी हैव आल्सो लाइक हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू किसी इवेंट्स आम रखीचु एक्टिविटी रखीचु जमती कि एसे राइटिंग डिबेट राइटिंग स्लोगन कंपटीशन सब अच्छी। So all aimed at fostering, creating a deeper like sense of understanding, deeper understanding of vigilance and creating amar gote jemti corruption free society karibu
एवं व्हाट इज द बेसिकली इल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन ऑन आवर सोसाइटी से विषय भी से किसी जानिबे एंड वी आर वेरी लाइक हैप्पी। मोनालिसा बेरा आईएमबी कॉलेज भुवनेश्वर रे आज हमर होची नेशनल अवेयरनेस विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम। आज ये तो